તો હવે વાત કરીએ મહાયુદ્ધની। સતત પાંચમા દિવસે ઇઝરાયલ અને હમાસનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે। અત્યાર સુધીમાં 3000થી વધુ લોકોના મોત નિપજ્યા છે। ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટી પર મેળવ્યું છે નિયંત્રણ। 1.87 લાખ લોકોએ ઘર છોડી હોવાની માહિતી છે। ગાઝા પટ્ટી નજીક 1500 આતંકીના મૃતદેહ મળ્યા છે। ભારત સહિત દુનિયાના કેટલાક દેશોએ ઇઝરાયલનો સાથ આપ્યો છે। અમેરિકાએ પણ ઇઝરાયલને મદદનું આહવાન કર્યું છે। તો ઇઝરાયલે પોતાની સીમા પર 3 લાખ સૈનિકો કર્યા છે તૈનાત। આ ઉપરાંત ઇઝરાયલની સેનાએ નાગરિકો માટે એક એડવાઇઝરી પણ જાહેર કરી છે, જે પ્રમાણે લોકોને શેલ્ટર હોમમાં રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। તો ઇઝરાયલથી ન્યૂઝ 18નું ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટિંગ। યુદ્ધની સ્થિતિનો ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ। યુદ્ધના મેદાનથી આ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। યુદ્ધ વચ્ચે ઇઝરાયલમાં જાણે સન્નાટો છવાઈ ગયો છે। તેલ અવીવથી આસ્કલોન સુધીનો સતત ધમધમતો માર્ગ જાણે સૂનો થઈ રહ્યો છે। સતત થઈ રહેલા હુમલા વચ્ચે લોકો ઘરથી બહાર નીકળવાનું પણ ટાળી રહ્યા છે। ઇઝરાયલના અનેક વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ છવાયો છે। इजराइल का सबसे बड़ा शहर जिस पर सबसे ज्यादा हमास की तरफ से अटैक हो रहा है वो है एश्केलॉन, जो कि दक्षिण भाग में इजराइल के। और हमारे साथ एश्केलॉन म्यूनिसिपैलिटी के सीईओ मिस्टर हेजी हैं। ही इज विथ मी। हेजी, वेलकम टू न्यूज 18 नेटवर्क 18। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू वांट टू सेंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम इंडिया टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया एंड वी आर हियर टू कवर दिस वॉर। व्हाट इज द सिचुएशन here? So I think that before even speaking about the situation, I think it's a good opportunity to thank to India Prime Minister that support us in this very, it's really to define even the situation. So thank you very much to India Prime Minister. What we see here that we are speaking about terrorism, when I'm trying to define those people, I cannot really define them as human. You probably all saw those pictures. You probably go to visit the border, you see those pictures in yourself as well. So the situation is quite, from one hand, very stressful. Just we can see the damage here. We can see the damage here. Out of 600 missiles hit from Hamas, 400 missiles have been shot down. 400 missiles have been shot down. 220 hit the buildings and other parts of Ashkelon. Mr. Heji, the Ashkelon municipality CEO was with me and ये कह रहे थे कि किस तरह से अब तक 600 मिसाइल से हमला किया गया हमास की तरफ से। करीब 400 मिसाइल को गिरा दिया गया। 220 मिसाइल या तो बिल्डिंग पे गिरे या सड़क पे गिरे या जो स्ट्रक्चर हैं वहां पर गिरे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन्होंने धन्यवाद किया है कि आतंकवाद के मसले पे जिस तरह से भारत ने इजराइल का समर्थन किया है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, एश्केलॉन, इजराइल। તો જે પ્રકારથી ઇઝરાયલનો આ જે વિસ્તાર છે ત્યાં અત્યારે રોડ પર સન્નાટો છવાયો છે અને યુદ્ધભૂમિ પરથી ન્યૂઝ 18 લાઈવ કવરેજ છે, પડપડની માહિતી છે આપ સુધી પહોંચાડી રહ્યો છે। આ તમામ જે વિસ્તાર આપ જોઈ રહ્યા છો અહીંયા સન્નાટો જોવા મળી રહ્યો છે। लगातार आपको इजराइल के अलग अलग हिस्से से हम दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हैं। तेल अवीव में हम लोग थे। तेल अवीव के बॉर्डर एरिया में है और तेल अवीव से जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ जाते हैं, यानी गाजा स्ट्रिप की तरफ जाते हैं, वहाँ खतरा बढ़ते जाता है। हम इस वक्त तेल अवीव से एश्केलॉन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि गाजा पट्टी से बहुत नज़दीक है। गाजा पट्टी में भी बहुत खून खराबा हुआ है। हमास का वहीं कब्जा है। इजराइल ने हमला किया। लेकिन अब आप यहाँ से तस्वीरें देखें। ये सड़क हमें ले जा रही है एश्केलॉन की तरफ। एश्केलॉन और एश्केलॉन के आसपास के दूसरे जो छोटे शहर हैं गाजा पट्टी के करीब, वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। हर पल 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 वहाँ बमों की आवाज़ आती है, मिसाइल की आवाज़ आती है। यहाँ से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं लेकिन सड़कों पे कोई आपको नहीं दिखेगा। चाहे तेल अवीव की बात करें या फिर एश्केलॉन की बात करें, जेरूसलम की बात करें। इधर की आप तस्वीरें देखिए। इधर की तस्वीरें आप देखेंगे
जितने भी बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। यहाँ से जैसे जैसे हम निकलेंगे आपको सड़क पे गाड़ियां दौड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने पे लोगों की मनाही नहीं है। लेकिन हर शहर में, क्योंकि मिसाइल अटैक बीच बीच में हो रहा है, तेल अवीव में भी मिसाइल अटैक हुआ, एयरपोर्ट के बगल में मिसाइल अटैक हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाएंगे तेल अवीव के बाद दक्षिण में, साउथ में, तो आपका खतरा बढ़ते जाएगा। आप देख सकते किसी भी घर के बाहर आपको कोई नहीं दिखेगा। सड़क पे लोग जिन्हें मूवमेंट करना है इमरजेंसी कारणों से वो मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी भी शहर में, तेल अवीव हो, मार्केट एरिया हो या रिहायशी एरिया हो, एश्केलॉन तो पूरा घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है। यहाँ ये जो सड़क है, यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आप सामने देखिए, गाड़ियों के अलावा कोई भी किसी भी आगे आपको घर दिखेंगे, वहाँ कोई नहीं दिखेगा आपको। और हम ये दिखाने का मकसद ये है, बीच बीच में जैसे जैसे हम चल रहे हैं, बीच में कई बार मिसाइल की आवाज़ आती है। ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि आपको हम तेल अवीव से एश्केलॉन की तरफ जाते हुए स्थिति बता सके, किस माहौल में पूरा का पूरा इजराइल इस वक्त है। The reason is we got in Ashkelon a bomb attack. Even my house injured and my building injured 4 times, and it's very very scary. If you're not from the city, you don't know where to go, where to secure yourself, and if you don't have where to go to secure yourself, you got a problem. This is a matter of death or life. તો જે પ્રકારથી અત્યારે યુદ્ધની જે પરિસ્થિતિ છે, ઇઝરાયેલના જે આ વિસ્તારો છે ત્યાં સૌથી વધારે અસર એટલા માટે પણ જોવા મળી રહી છે કારણ કે અહીં વારંવાર હુમલા થઈ રહ્યા છે। તો તાજેતરમાં ચાલી રહેલા હમાસ અને ઇઝરાયેલના યુદ્ધ વચ્ચે અભિનેત્રી નુસરત ભરૂચા ઇઝરાયેલમાં ફસાઈ હતી। ઇઝરાયેલથી સુરક્ષિત પરત ફર્યા બાદ અભિનેત્રી નુસરત ભરૂચાએ પોતાનું નિવેદન જાહેર કર્યું છે। નુસરતે કહ્યું કે ભારતથી સુરક્ષિત દેશ કોઈ નથી। ઇઝરાયેલમાં રહ્યા પછી મને મારા દેશની કિંમત થઈ છે। Hi everyone, I wanted to take a moment and say thank you to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। So I want to take this moment and say thank you to the government of India, say thank you to the Indian embassy, say thank you to the Israel embassy for guiding us, for advising us, and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war, and I really hope for peace very soon.